Hi all, Ashish Kyal here. It's fantastic to have you all here. Pallavi, Arvind, Shishagri, Balbir. It's warm welcome to Ashish Kyal Trading Gurukul and आप सभी को आज Friday at 4 की शुभकामनाएं. We are going to look at markets in a very simple way. जय श्री कृष्णा. भागीरथ, आपका नाम भी भागीरथ ही है. It's always fantastic. प्रीतेश, डॉक्टर शाहू से बहुत समय के बाद आपसे मुलाकात हो रही है आज के दिन. It's going to be very, very interesting study where I'm going to talk about today something very different on option strategy. तो आप लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते पीपल देयर ऑन यूट्यूब आर एबल टू हियर मी आउट लाउड एंड क्लियर. आप मुझे सुन पा रहे, देख पा रहे. एंड यहाँ पर मैं जस्ट चेक कर रहा हूँ. इफ यस देन गिव मी अ बिग थम्स अप कि आप मुझे देख पा रहे यूट्यूब पे. जूम पे आ जाइए. ये रही लिंक जूम की. बिकॉज व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर अक्रॉस समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. मैं ये जूम की लिंक को पिन भी कर देता हूं यहां पर. लवली. सो मैंने ये पिन किया है. एंड वी आर गोइंग टू have a very, very interesting time here. We are going to look at markets in like never before. But before I move on, I'm going to take a very quick poll. What do you think is Nifty going to be trending in the next week? आने वाले कमिंग वीक में फ्राइडे तक निफ्टी अप है कि डाउन है, ये मैंने बहुत क्विकली रखा है. एंड यहाँ पर पोल रखा है. पोल में पार्टिसिपेट करिए सो दैट आई नो वेदर यू आर एक्सपेक्टिंग मार्केट्स टू गो डाउन और अप. मैं तो मेरा व्यू दूंगा ही, लेकिन आप लोग अपना व्यू दीजिए जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है. एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू शेयर अक्रॉस वेरी क्विकली माई टेलीग्राम कम्युनिटी लिंक, जहां पर आप ऑफिशियल टेलीग्राम कम्युनिटी पे ज्वाइन हो सकते हो. फेक टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं करना है. नीचे एड्स आते हैं टेलीग्राम पे, उसे पैसा डबल नहीं होता है, उस पे क्लिक नहीं करना है. आई डू नॉट हैव एन ऑप्शन टू स्टॉप द एड्स दैट टेलीग्राम शोज बिलो द चैनल. वो ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो एड्स दिखते हैं, वो फेक एड्स होते हैं. वेयर डू नॉट फॉल प्रे टू दैट. प्लीज एंश्योर दैट. भाव भगवान છે, प्राइस इज गॉड एंड देर इज नो रिस्क फ्री. देर इज रिस्क एंड देर इज नो गारंटी. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. मैं 10 फेक नहीं है, बहुत सारे. एंड एवरी अदर डे एक बंद होते हैं, 10 खुल जाते हैं, वैसा है. तो जस्ट इंश्योर दैट यू ज्वाइन द राइट वन एंड यू डू नॉट फॉलो प्रे. आई नेवर गारंटी एनीथिंग. प्लीज कीप दैट इन माइंड. ये पोल में एंड कर रहा हूं. बहुत ही इंटरेस्टिंग पोल है दोस्तों. यहाँ पर ये पोल में मैंने अभी शेयर किया सभी के साथ में. यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो है. मतलब ज्यादातर लोग नीचे का सोच रहे हैं, लेकिन ज्यादा परसेंटेज वाइज इतना नीचे गिरेगा लग नहीं रहा है. मतलब बहुत ही कम परसेंटेज वाइज नीचे जाने वाला ऐसा लग रहा है. मैंने पोल शेयर किया है आपके सामने यहां पर. एंड बहुत ही क्रूशियल है. ट्विटर भी फेक है, तो ट्विटर का जेन्युइन हैंडल शेयर हो जाएगा आपके साथ. आप ट्विटर को भी जेन्युइनली चेक करिए और फॉलो करिए. ठीक है, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट लिखा होगा वहां पे. नाउ व्हाट्स हैपनिंग अराउंड, व्हाट टू डू नेक्स्ट एंड व्हाट इज हैपनिंग विद मार्केट्स एंड एवरीथिंग. इसके बारे में मैं बात करता हूं आप लोगों के साथ बहुत ही क्विकली. पहली चीज, एक तो चीज आपको ये समझ के चलनी है कि मार्केट्स में फिलहाल इट इज मूविंग ऑन द बेसिस ऑफ न्यूज एंड इवेंट. अगर यहां से एयर स्ट्राइक्स, मिसाइल स्ट्राइक्स रेदर, दुबई पे ज्यादा हो जाती है और यूएई पार्टिसिपेट्स इन द वॉर, बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है. देन द मार्केट्स विल गैप डाउन एंड गैप कैन बी 400-500 पॉइंट्स. अगर सीज फायर डिक्लेयर हो जाता है, यू नेवर नो, सडनली आउट ऑफ द वुड्स हो जाता है, जैसे इंडिया पाकिस्तान एक ही दिन होके खत्म हो गया नेक्स्ट डे, इतना फास्ट हो सकता है. सीज फायर अगर डिक्लेयर हो गया तो मार्केट कैन जस्ट गैप अप बाय 500-600 पॉइंट्स एंड शॉर्ट कवरिंग होगी अलग. दैट कैन हैपन now. Or if it get extended to a lot of extent, something like Russia Ukraine which is happening. But the problem is Russia Ukraine स्टाइल का वॉर नहीं हो सकता, बिकॉज रशिया यूक्रेन इज अ बॉर्डर टेरिटरी वॉर विच इज हैपनिंग वेयर ओनली 2 कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग डायरेक्टली. इनडायरेक्टली तो पूरा नेटो है. बट यूएस कैन नॉट अफोर्ड दैट लॉन्ग गोइंग वॉर. इट कैन नॉट बी दैट लॉन्ग गोइंग वॉर बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं. सो यूएस कैन नॉट अफोर्ड दैट. बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियो ये है. इफ यू आर ओके विद मी टॉकिंग अबाउट मार्केट्स बट ऑल्सो अबाउट दिस इवेंट, I can talk about something very interesting, which I came across. The drone that Iran is striking back on Israel, on all the Gulf Asian countries, is costing them $20,000. Now, each
drone cost that much. To neutralize that drone attack, मिसाइल जो छोड़ी जाती है, to neutralize it, to destroy it in the air, that cost $4 million. So risk reward देखिए यहां पर, risk reward है 1:200 का, which means Iran has a risk of 1, and whoever is destroying that drone in the air has a risk of 200, because 1:200 का risk reward है. Now that's the challenge, and that's what is making everyone jittery, because US is attacking only the specific areas there where it can be government buildings, it can be specific areas in Iran, or where the activities are happening of the regime. But Iran is attacking randomly different countries, and that has made it a lot more complicated. Lot more complicated. That complication can be solved only by ground operations, but Iran is such a huge territory. Ground operation karna is also risky, and that's why the war can get stretched. And the question is not who is going to win the war by way of firepower. The question is who is going to sustain the war. That's the question. And that's how markets behave. Why I'm talking about Iran, Israel, US right now. That's what markets are going to do with you. Not who is going to win this time. आज के दिन पैसा बन गया, कल के दिन चला गया. नहीं. Who is going to sustain these eventful days? And those people are going to come back in the markets and stay in the market for years ahead. समझ में आ रहा है? Am I making sense? Sustainability, survival is now the name of the game. It is not about hitting the 60s anymore. It is not about taking ones and twos. It is only about who is able to keep their capital intact and maybe make something more out of it. That strategy is going to work for you if you are trading market in the current environment. Market will move in gaps. Keep that in mind. मैं ये short video बनाता हूँ. कल का एक video बनाया था मैंने. Was it useful? I'm asking every one of you. And is it making sense कि short videos जो मैं बना रहा हूँ, morning के tweet levels जो मैं दे रहा हूँ, is it helping you guys? Then let me know so that I keep making. And I'm also started making 1 minute nuggets. जैसे आज भी 1 minute 2:30 को डाला था मैंने. So 1 minute nuggets भी मैं डाल रहा हूँ, just to ensure that you understand. Now what I am doing as a trader. As a trader, I've restricted myself from not trading overnight positions. Even if I am trading overnight positions, I am going with the spread. Spread मतलब क्या होता है? आप लोग ऑप्शंस ट्रेड करते हैं क्या? मैं एक बहुत क्विकली पोल ले रहा हूं. डायरेक्टर साहब नोट करना, ये ऑप्शन ट्रेडर्स का इंफॉर्मेशन आप नोट करके रखना जो यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं. ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कितने लोग ऑप्शन ट्रेड करते हैं. पोल लिया मैंने. जूम पे आइए यूट्यूब वाले जो सो आपको यहां से ऑप्शंस पोल में पार्टिसिपेट करने मिलेगा. एवरी वन ऑफ यू. ओके, आप लोग कर रहे हैं. और शॉर्ट वीडियोस आर सुपर हाई डोज बूस्टर फॉर अस. ओके, फैंटास्टिक. बहुत सारे जन ऑप्शंस में ट्रेड करे. पोल को मैं बहुत क्विकली एंड कर रहा हूं. एंड यहां पर okay, lovely. What we are going to do next? Let us go back on the chart. Let us look at charts first. Let us look at what is going to make sense in this kind of scenario and which assets are going to move, how we have to look at it. Simple chart के ऊपर हम method को देखते हैं. I'm just going to share it across. Just give me a second. मैं open कर रहा हूँ यहाँ पर मेरी स्क्रीन, और आप देख पा रहे कि नहीं मुझे बहुत क्विकली बताना. ओके, लवली. सो यहां पर मैंने मेरी स्क्रीन शेयर की है. एवरीवन इज एबल टू सी द स्क्रीन हियर. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट था 4th of March, जिसपे हमने नोट रखा था आज से नहीं, बहुत समय पहले से. एंड निफ्टी मैनेज्ड टू फॉर्म अ लो एग्जैक्टली ऑन दिस 4th of March and showed some kind of a reversal on the upside, which happened yesterday, and today again it gave up. That's why I'm saying you do not try to become a positional trader yet unless and until you see a pattern. Pattern is a very powerful method. When I talk about pattern, it can be an Elliott wave pattern,
like zigzag, flat, triangles. It can be new wave patterns like diametric, or it can be a simple triangle head and shoulder pattern. पैटर्न है क्या, वो देखना है और हमें ट्रेड करना। फिलहाल basis of wave theory, if I'm looking at a neo wave perspective, this entire fall that you see here after wave G completion, और आपको ध्यान होगा G completion मैंने बहुत पहले कर दिया था। After wave G completion, this fall was wave W. Earlier I was expecting an ABC करके complete हो गया नीचे, लेकिन since we just spiked up and again broke down the channel, this became WX, and the ongoing movement is nothing but wave Y, which is currently ongoing. So फिलहाल हम इस फॉर्मेट में ट्रेंड में है, and the trend is on the downside. So we are not reversed as of now, क्योंकि वीकली ट्रेंड बेरिश है, डेली ट्रेंड फिर से बेरिश हो चुका है, टाइम साइकिल 4th ऑफ मार्च के जोन में है, लेकिन इवेंट भी है। सो कीपिंग एवरीथिंग माइंड, अगर कोई बोले ना क्या फर्क पड़ता है, इवेंट होने दो या बॉम्ब ब्लास्ट होने दो या न्यूक्लियर अटैक होने दो, चार्ट के हिसाब से ऊपर जाए, ऐसा नहीं चलता। इवेंट रिजल्ट इनटू शॉर्ट टर्म रैंडम मूवमेंट। रिमेंबर दैट if anyone, any traders understand this, they will agree with me. Events will result into short term movement, but eventually the trend will resume. Eventually the trend will resume. इसका क्या मतलब है? हो सकता है कल गैप डाउन हो जाए, साइडवेज हो जाए, लेकिन इवेंचुअली वंस द सिचुएशन गेट्स लिटिल अंडर कंट्रोल, लेट अस वेट फॉर अनदर वीक, then things will stabilize and market will do what it has to do any which ways. That's how markets can behave during eventful period. इसमें करना क्या है फिलहाल के लिए? एज ऑफ नाउ भाव भगवान से 3 कैंडलस्टिक रूल. Can I say the overall trend is down and we are trying to again reverse downside? Yes. Okay. That's understood. But आप ओवरनाइट कैरी नहीं कर सकते, तो पोजीशंस तो करे कैसे, करना क्या है? बिल्कुल मैं बताऊंगा आपको. सो निफ्टी हैज अगेन क्लोज्ड बिलो प्रायर डे लो, टर्निंग डेली प्राइस एक्शन on downside. 24,300 is crucial, and below this नेक्स्ट गेन लेवल फॉलो कर रहे हैं आप लोग. 24,103 का गेन लेवल है नेक्स्ट, यहां पर, और 24,728 मैग्नेट है. इट्स वर्किंग अमेजिंग. मार्केट्स आर मूविंग इन गैप्स. डू यू वांट टू नो हाउ डू वी ट्रेड पोजिशनली इन दिस काइंड ऑफ मार्केट? एक स्ट्रेटेजी दूं आपको मैं. यहां पर पोजिशनली मार्केट को कैसे ट्रेड करना है, अगर गैप से मूव हो रहा है, पोजिशनली क्या करना है? पहली चीज, ऑप्शन बेच के पैसा बनाना मुश्किल होगा, बिकॉज द आईवीज आर इरेटिक. आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड अक्रॉस अ वेरी डिटेल्ड chart on IV today of options, how it's behaving. What you have to do is you have to create a spread. But how do I decide which direction I need to create a spread? As of now, if I go on 1 hour time frame chart, let me go on 1 hour time frame chart. This is a classic channel that we can see. यहां पर ये चैनल है, दिख रहा है आपको? Everyone is able to see my chart in the screen. Now, if you're looking at this chart, prices can possibly retest 24,290 again. Retest करेगा, ये चैनल सपोर्ट है, ब्रीच कर सकता है, डिपेंड्स ऑन द इवेंट एंड द मैग्नीट्यूड. सो व्यू क्या होना चाहिए? बाय साइड पे तो नहीं है फिलहाल के लिए, मे बी इवेंट ड्रिवन हो गया, डायरेक्टली इसके ऊपर आ गया, तब देखेंगे. बाय के लिए मुझे कौन सा लेवल चाहिए? ये स्पेसिफिक लेवल के ऊपर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी. सेल के लिए रिस्क रिवॉर्ड देखना है. अभी रिस्क रिवॉर्ड बैठ नहीं रहा है, क्योंकि सेल किया है या पुट बाय किया है और मार्केट गैप अप हो गया 300 पॉइंट, तो रिस्क रिवॉर्ड बैठ नहीं रहा है. ऑल्सो डू यू अंडरस्टैंड दैट द प्रीमियम्स हैव स्काई रॉकेटेड हाई? पुट प्रीमियम्स हैव स्काई रॉकेटेड हाई. आर यू विथ मी? पुट प्रीमियम हैज बीन वेरी वेरी हाई. तो करे क्या? एनी गेसेस? मतलब पुट प्रीमियम बढ़ चुका है, तो पुट बाय करना रिस्की है. ऑप्शन सेल करना तो और रिस्की है, क्योंकि इरेटिक आईवी बिहेवियर.
व्यू बेरिश है लेकिन मार्केट जा भी नहीं रहा है, सडनली रिवर्स भी हो रहा है। या तो इंट्राडे बनो या स्प्रेड क्रिएट करो। फैंटास्टिक जसप्रीत, संजय, हुसैन, वरुण, कॉल बेचना नहीं है। कॉल नहीं बेचना है, क्योंकि गलती से कॉल पे तो प्रीमियम भी नहीं है, गलती से सीज फायर अनाउंस हो गया। यू नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। यू नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। कल का मूवमेंट देखा 300 पॉइंट में कॉल का क्या हुआ था, इफ यू नो। सो व्हाट डू यू हैव टू डू देयर? आई एम गोइंग टू गो ऑन माय गो चार्टिंग स्क्रीन नाउ and show you one method. Up to you. If you're an option trader, you can do this method. That's why I love options, because options में आप बहुत कुछ कर सकते हो। यहां पर यहां पर जाना है, and if you do not have a go charting, you can be a part of go charting. Link will be shared across. You get some offers if you sign up using the link. Link will be shared. So यहां पर डक्स पे जाना है, चार्ट पे क्लिक करना है। Once you click on the chart here, once you click on the chart here, ओके, मैं जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं साइन आउट हो चुका हूं। लेट मी जस्ट साइन बैक इन। आर यू एबल टू सी माय स्क्रीन? कौन सा स्क्रीन दिख रहा है आपको? मेरा गो चार्टिंग स्क्रीन दिख रहा है क्या? ओके, लेट मी जस्ट गो बैक ऑन द चार्ट हियर। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी जस्ट साइन बैक इन अ मोमेंट, and meanwhile you can use the link which is shared across. They give some offers, discounts which is currently ongoing, so आप वो कर सकते हो। हाँ, साइन इन हो गया। नाउ आई एम गोइंग टू गो बैक ऑन माय स्क्रीन। यहां पर ओके, so once you are here, there is an option chain that you see on the right hand side. Can you see the chain here? The chain right hand side corner में दिख रहा है आपको? यहां पर मैंने क्लिक किया, and at the top you can see a basket icon. I'm clicking on the basket icon. Now what happens next? After doing that, I can create a position by buying, say, if I'm bearish, say for example, buying a 24,400 put option, say 24,400 put option, and selling, say, 24,250 put option, and I create a spread and I add to chart. तो डायरेक्टली क्या हुआ, स्प्रेड का चार्ट फॉर्म हो गया यहां पे। Everyone is able to see the spread chart. What I am going to ask you next is a very simple question that I want everyone to answer. ये स्पाइक को इग्नोर करो, स्पाइक इज इररेलेवेंट, वो इग्नोर करना, वो रॉन्ग है। डू यू सी अ पैटर्न? Just look at this chart. Anyone sees any kind of a pattern here? This is a spread which I created. इसे ट्रेड कैसे करना है? By, suppose if you are trading by buying a 24,400 put option and selling a 24,250 put options. By doing that, I am taking care of the premium जो बढ़ चुका है because of the IV spike. Can you see a pattern? It's very apparent and very clear. सिंपल सा पैटर्न मैं आपको यहां दिखा रहा हूं, जो आप बोलोगे वाह, ये तो नो ब्रेनर पैटर्न, नो ब्रेनर पैटर्न। कैन यू सी दिस? कैन यू सी दिस? एंड कैन यू सी हाउ मेनी टाइम्स एग्जैक्टली वो लेवल से गया, रिवर्स, रिवर्स, reverse? Can you see how brilliantly it worked all the time? And this was a breakout. No second thought. अगर यहां पर ब्रेकआउट वो दे रहा है, कैन आई से दिस इज माई स्टॉप लॉस? Swing low as my stop loss. I am teaching everyone to how to fish in this kind of an eventful market. भाई इवेंट है, और ये सब आइडियाज आते कहां से कि पूरा दिन ट्रेडर हूं,
अपॉर्चुनिटी ढूंढता रहता हूं एज अ ट्रेडर, एंड आई एम एन ऑनेस्ट ट्रेडर भाई, नहीं है अपॉर्चुनिटी, तो क्या करें? कुछ तो करना है, देखते कहां पर हमारा रिस्क को मैनेज करना है। माई इंटेंशन इज ऑलवेज मैनेजिंग द रिस्क and then making money out of it. So trying to manage the risk is the first thing to do. Can you see this chart? And can you see it is looking like a classic pattern? Is it a classic pattern? Inverted head and shoulder, like a textbook अगर आपने पढ़ा होगा। यह हमारे ब्रह्मास्त्र में किया था, मास्टर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस में, with multiple shoulders. And can I say the neckline is just brilliant? Can I say this is a buy? What level do you buy? You are now buying a spread. You're not looking at options individually. You are just buying a spread and selling the spread. You are buying a spread at around 43 rupees, 41 rupees. 41 पे आपने बाय किया, आपका स्टॉप लॉस क्या आएगा? 41 पे बाय किया, आपका स्टॉप लॉस आ गया 33 का। रिस्क रिवॉर्ड निकाल रहे गाइस, फोकस हियर, द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू, ओके, दिस इज बाय एट 41, स्टॉप लॉस एट 33। कितने का रिस्क हुआ? रिस्क कितने का हुआ? 41 माइनस 33, 8 पॉइंट्स का रिस्क है। वी आर गोइंग टू मेक रिस्क टू रिवॉर्ड। You can do it positionally also. That's the beauty of this method. ये पहले कभी बताया नहीं मैंने, पहले जरूरत ही नहीं पड़ी हेज करने की। हेज करके जाते थे, लेकिन स्प्रेड क्रिएट करके खाली हेजिंग के वक्त रखते थे। नाउ आई एम सेइंग दैट डू नॉट क्रिएट स्प्रेड बाय क्लोजिंग हेज, यू जस्ट ट्रेड द स्प्रेड, which means my risk is how much? Guys, I'm asking a simple question. कितने पॉइंट का रिस्क है? 8 पॉइंट्स का। डन। मेरा रिवॉर्ड कितने पॉइंट्स का होगा वो देखते हैं। दिस इज द हेड। विल इट वर्क? डिपेंड्स ऑन मार्केट। यहां पर 18.60 है, नेकलाइन है 41, सो 41 माइनस 18.60, मैं एज्यूम कर रहा हूं आपको पता है ये चीज। 22.40 का टारगेट है, 41 में मैंने ऐड कर दिया। मेरा टारगेट कितने पॉइंट्स का? 22 पॉइंट्स का। ऊपर कितना पॉइंट्स आना चाहिए? 63.40। ये था मेरा टारगेट। आई एम आस्किंग अ सिंपल क्वेश्चन, डिड इट वर्क? और इसके अंदर इफ यू कैन अप्लाई वन वेरी पावरफुल मेथड which is known as Keltner channel, you will see its true power. You are applying, this is a 5 minute chart, huh? This is a 5 minute chart of a spread. ये ध्यान देना आप, केल्टनर चैनल एंड केएसटी अगर आपने अप्लाई कर दिया, इट्स अ वेरी 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 पावरफुल मेथड which actually works like magic. Are you seeing this? Are you with me? Every one of you. कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? हम कर क्या रहे हैं मालूम है? हम ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट क्रिएट कर रहे हैं इन दिस मार्केट। When buying options, selling option, buying futures, selling futures has become risky, we are creating an instrument which is systematic and non-risky. Risky मतलब रिस्क उतना तो है, 8 पॉइंट जितना रिस्क है। अगर ज्यादा बड़ा गैप डाउन हो गया तो क्या? ठीक है, कितना ही चला जाएगा। ये दिस इज हाउ यू हैव टू मैनेज। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, निफ्टी ऑप्शन स्प्रेड is the best, simplest method to trade overnight in this market scenario. Small risk and high reward using pattern analysis. Combine this with Keltner to see the magic on 5 minute chart. You can combine this with Keltner to see the magic. समझ में आया आपको? Am I making sense? And you can do it on any stocks also.
You can do it on anything. Simple. कैन वी सेल आयन कॉन्डोर स्ट्रेटेजी निफ्टी? कर सकते हो, डिपेंड्स आपका व्यू क्या है, आपका रिस्क एपेटाइट क्या है। एंड यहां पर स्प्रेड बहुत ट्रेड किया लेकिन कभी चार्ट को नहीं देखा। देखो ना, चार्ट को देखो। इवन इफ यू आर सेलिंग ऑप्शन, लुक एट द चार्ट, लुक एट द डिफरेंस ऑफ द स्प्रेड। इट्स गोइंग टू बी क्रेजी। डू यू आर देयर ऑप्शन सेलर्स हियर? टारगेट कैसे निकाला? कोई क्वेश्चन है क्या इस चार्ट पे? आई टीच यू इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आई एम गोइंग टू टीच यू। डोंट वरी अबाउट इट। मैं फिर से बताता हूं। हेड एंड शोल्डर पैटर्न के ऊपर क्या होता है? दिस इज अ पैटर्न, टेक्स्ट बुक पैटर्न, ये मेरी बुक में भी लिखा हुआ है। दिस इज हेड, शोल्डर एंड शोल्डर। हाउ डू वी डिराइव टारगेट? कंजर्वेटिव टारगेट इज विड्थ ऑफ द शोल्डर ऑन द अपसाइड, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड नहीं बैठेगा उसमें। एग्रेसिव टारगेट इज ब्रॉडकास्टिंग, फोरकास्टिंग हेड ऑन द अपसाइड। दैट्स माय एग्रेसिव टारगेट, दैट्स माय एग्रेसिव टारगेट। सो हाउ डू आई डिराइव रिस्क रिवॉर्ड? सो माय स्टॉप लॉस कितना है? शोल्डर का लो, दिस इज माय स्टॉप लॉस। ठीक है, दिस इज माय टारगेट। So if I measure this with, project it on the upside, my target comes to around 63.40. तो 41 पे अगर बाय किया तो कितने पॉइंट्स का मिला मुझे टारगेट? अराउंड 22 पॉइंट्स का। स्टॉप लॉस कितने पॉइंट्स का मिला? 8 पॉइंट्स का। रिस्क रिवॉर्ड कितने पॉइंट्स का मिला मुझे? 1:22 डिवाइड बाई 8 करेंगे हम, 1:2.75। ट्रेडेबल है कि नहीं है? आई एम आस्किंग यू अ सिंपल क्वेश्चन, इज इट ट्रेडेबल? इज दिस ट्रेडेबल? Absolutely. That's how you have to do it. And if you want, you can use an indicator, which is a very powerful method, which is known as Keltner channel. And you will see its power. Keltner channel है, 5 मिनट पे KST के साथ लगाओ. You will see its true power. This is a very powerful method. Exit कैसे करना है? रिस्क रिवॉर्ड के बेसिस पे। आई टीच यू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। एक काम करेंगे, कल आप लोग अवेलेबल हो क्या सुबह? ब्रेव ब्रेव कॉन्सेप्ट, थैंक यू वेरी मच। सम अच्छा लगा कि कॉन्सेप्ट को? इट्स एन इनोवेशन इन ट्रेडिंग, नॉट ओनली इन टेक्निकल एनालिसिस, इट्स एन इनोवेशन इन ट्रेडिंग। क्योंकि कोई भी ऐसा आपको सिखाएगा नहीं। कभी देखा है कोई ऐसी बात करते हुए भी? ओनली अ ट्रेडर कैन टॉक अबाउट दीज थिंग्स, बिकॉज पूरे दिन बैठ के मैं वही सोचता हूँ यार, अपॉर्चुनिटी कहां से जनरेट करूं, और जो अपॉर्चुनिटी जनरेट करता हूं मैं आपको सिखा देता हूं। मेरी टीम भी बोलती है यार सर आप सब चीज करते हो, वही बता देते हो तो कैसे चलेगा? मैं बोला चलने दो ना, क्या ही फर्क पड़ रहा है। गुरुकुल है, सभी सीखेंगे, एक साथ आगे बढ़ेंगे। दैट्स हाउ वी हैव टू डू इट। एंड विल इट वर्क ऑलवेज? लेट्स सी, इट विल वर्क। पैटर्न है यार, पैटर्न तो चलता है, बट 70%, 30% रिस्क तो रहता ही है। दैट्स हाउ यू हैव टू लुक एट इट, दैट्स हाउ यू हैव टू डू इट। यू नीड टू हैव दिस मेथड, यू नीड टू बी। होता है ना यार, इंडिया ने 250 रन भी बना दिया तो भी लास्ट लास्ट तक चल रहा था। वैसी ही बात हो जाती है कि भाई सब कुछ आ गया लेकिन लास्ट लास्ट तक अगर एक गड़बड़ हो गई तो मैच हार जाएंगे। वही चीज है यहां पे, एक गड़बड़ अगर कर ली यहां पर, बड़ा लॉस होगा। दैट्स वाई स्प्रेड नेकेड बाय करूंगा मैं। पुट का आई भी तो देखो यार, ट्यूसडे को एक्सपायरी है, 24,400, 210 पे चल रहा है। 150 पॉइंट पे 24,250 का पुट ऑप्शन चल रहा है। 23,500 का पुट ऑप्शन 20 रुपया था, सडनली निफ्टी 50 पॉइंट्स आया, वो 40 रुपीज हो गया। 23,000 का पुट ऑप्शन 9 रुपए पे चल रहा है। ये सब पूरा दिन यही देख रहा था मैं। तो ये सब को अगर मैं नेकेड 23,000 का भी पुट बेचता हूं 9 रुपए के लिए, इज इट वर्थ द रिस्क? निफ्टी अगर कल गैप डाउन हो जाता है तो 9 रुपए का 50 रुपया हो जाएगा, इट्स नॉट वर्थ द रिस्क। 23,500 यहां से खाली 800 पॉइंट दूर है, अगर वो बेचता हूं मैं 20 रुपीज पे, यार वो तो 50 पॉइंट के नीचे स्पाइक में। दैट पुट ऑप्शन वेंट फ्रॉम 20 to 45, 50 rupees in just 50 points. What will happen to it if Nifty gaps down by 400 points? Selling, buying 24,000 put option is not making sense expiry Tuesday को। तो मतलब करना है क्या है? This is how you have to do it. Sensex का 79,600 from 50 to 800 in 10 minutes. Yes, if you're on the right side of the trend and if you can exit it correctly. If you're on the wrong side, you know how much you lost. So this is how you have to innovate. This is how you have to think. This is how you have to understand markets. And this can come, ये अंदर से आता है, मालूम है? ये मुझे
ऐसा नहीं है कि ये बुक में पढ़ा है, ये कहीं लिखा है, नहीं, ये अंदर से आता है। इतना दिन रात वही करता हूं तो अंदर से आता है ये। दीज आर ऑल क्रिएशन। तो ऐसा है। आप लोग कौन कौन कल अवेलेबल है? कल करेंगे हम मास्टर क्लास में ऐसे ही कुछ अलग करता हूं मैं। कल की मास्टर क्लास में वेरी डिफरेंट चार्ट, वेरी यूनिक वे ऑफ सीइंग दिस काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी कंबाइनिंग टाइम साइकिल ऑन अ स्प्रेड। शेल वी डू दैट? टाइम साइकिल और एन ऑप्शन स्प्रेड। लेकिन जो लोग ऑप्शन नहीं आते बोलेंगे यार सर ये कहाँ एडवांस लेवल पे ले आए हो, हमें बेसिक ही नहीं आ रहा है। So I don't want to really get into those mode. If you combine time cycle, the rhythm that you see here is simply unbelievable. You will see how market behaves. If I simply plot a cycle on this rhythm of a 5 minute chart, you will see its magic. This is just insane. मतलब ये साइकिल को प्लॉट करो आप खाली थोड़ा सा और देखो इसका मैजिक। This is how you can do it. Do look at this cycle. Look at this cycle and trade basis of that. It works. These are time cycles, rhythm. So ये स्प्रेड है, इसके ऊपर वॉल्यूम प्रोफाइल लगा है, साथ में टाइम साइकिल लगा है। दिस इज व्हाट आई डू, दिस इज व्हाट आई लव टू इट, आई एम पैशनेट अबाउट इट। कल का लिंक शेयर किया गया डायरेक्टर साहब सभी के साथ में फॉर द मास्टर क्लास। एक्चुअली आई हैव टोल्ड अ फ्यू टाइम्स, आपने शेयर नहीं किया। कैन समवन प्लीज शेयर इट अक्रॉस वेरी क्विकली? एंड इट्स नॉट अबाउट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। चले दूसरे चार्ट पे चले। बैंक निफ्टी देखना है क्या? बैंक निफ्टी पे क्या हो रहा है? आर यू विथ मी? ओके, एवरी वन ऑफ यू। कल की लिंक यहां पर शेयर हुई है। इट्स गोइंग टू बी ऑन जूम प्लेटफॉर्म, इट्स गोइंग टू बी लवली। यू आर गोइंग टू लव व्हाट वी आर गोइंग टू डू। आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ चार्ट of option with time cycle, creating a spread and trying to see and forecast in the future how to trade these things. We are going to do that for the very first time, but you have to be there. और जो लोग बेसिक से है उनके लिए भी है, ऐसा नहीं है कि ये सारी एडवांस की चीजें मैं करने वाला हूँ। बेसिक से भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ओके, वी आर गोइंग टू बी डूइंग दैट इन अ वेरी वेरी सिंपलिस्टिक वे। चलिए मैं आपको बैंक निफ्टी के चार्ट पे लेके चल रहा हूं अभी। नॉट स्पेंडिंग मच टाइम, लेट मी गो ऑन द बैंक निफ्टी चार्ट। लेट अस लुक एट बैंक निफ्टी चार्ट। दिस इज एन निफ्टी ऑप्शन चार्ट। यहाँ पे वेव थियरी के बेसिस पे इंटरनल काउंट देखना है क्या हमें? what is happening around here and what is the chart pattern looking like, how is the entire wave pattern, यहां से क्या सजेस्ट कर रहा है वेव पैटर्न हमारे बारे में। बहुत ही क्विकली मैं आपको बता देता हूं जस्ट इन केस। ओके, यहां पर निफ्टी के ऊपर इंटरनल काउंट्स में डाल रहा हूं। सो वी had a very clear fall in the on the downside in the form of A. This looked to have formed a triangle pattern in the form of B. This was completed a C leg here. ये माइनर स्पाइक था ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम चार्ट विच वाज इन द फॉर्म ऑफ, यहां पर ये वेव डी हो सकता है और मे बी अनदर वेव एक्स, possibly another wave x. We completed wave A down here. We had a pullback in the form of wave B here. And this is again a C leg going on. There are two patterns possible from an Elliott wave perspective over here. Two patterns. What are those two patterns? From an Elliott wave perspective, what are two patterns possible here after wave X? Pattern. Understand the pattern first. Which two patterns are possible? Can someone tell me? Which two patterns are possible after wave X? Can we mark it a diametric? Yes, I was thinking of that, but C के बाद में जो E leg should be equal to that of C. E is small, so doesn't look like diametric fall. And B has taken a lot of time. So this looks much more appropriate as of now. कोई बताया ये कौन सा पैटर्न बन सकता है? इट कैन बी अ फ्लैट आफ्टर एक्स और इट कैन बी अ ट्राइंगल आफ्टर एक्स। दो पैटर्न है, फ्लैट और ट्राइंगल। एब्सोल्युटली वैभव, ब्रिलियंट। फ्लैट या ट्राइंगल है। ट्रेडिंग अ ट्राइंगल इज ट्रिकी, मतलब मार्केट साइडवेज हो जाएगा। फ्लैट को अगर ट्रेड करें तो सी लेग नीचे आएगा। बेचेंगे अगर 24,290 के नीचे तो लेट हो जाएंगे। If we sell below this level of 24,300, we will be late because channel support भी kick in हो रहा है।
तो अगर आपको बेचना ही है तो यहीं बेचना था, एंड देन राइड इट, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड फिट नहीं हो रहा। सो एक्सपेक्टेशन क्या है? इफ इट्स अ फ्लैट, possibly will move down here and then will move back up. This will result in, if this results into a failed breakout अगर ये हो गया, we get an opportunity to scalp on the upside again, छोटे स्टॉप के साथ में, लेकिन ये बहुत फास्ट ट्रेड होगा, रिएक्शन टाइम नहीं मिलेगा। सो अगर ये फेल्ड ब्रेकआउट हुआ तो वी विल कंप्लीट वेव सी हियर, फेल किया। हाउ डू आई नो द अप ट्रेंड हैज स्टार्टेड? हाउ डू आई नो दैट द अप ट्रेंड हैज स्टार्टेड? By faster retracement of the last falling segment, which means this. तो अल्टीमेट बुलिश सिनेरियो के लिए मुझे कौन सा लेवल चाहिए? अल्टीमेट बुलिश सिनेरियो के लिए मुझे 24,850 चाहिए। 24,850, 635 is for short term, you can say that. Ultimately 24,850 के ऊपर अगर निफ्टी जाएगा, that will be the ultimate level. और ये लेवल कौन सा है मेरा? फेल्ड ब्रेकआउट वाला 24,280। लेट मी चेक एग्जैक्ट लेवल क्या है। 24,000 ट्रेंड लाइन 250 260 के पास में, सो 24,260, 103 पे गेन लेवल भी है। सो आई एम कीपिंग द वॉच ऑन दिस लेवल प्लस द गेन लेवल 24,260 यहां। सो दिस इज माई चार्ट, this is my very very clear chart how I am going to see it for coming week from here. अब इसके ऊपर टाइम साइकिल डाल दिया, it will make a lot more sense for me to trade. Clear है ना every one of you? So Nifty path ahead for coming week using neo wave analysis and expecting a push down, then failed breakout with upside reversal, move above 24,850 must for positive cycle to kick in. So this is how we combine neo wave, time, and two-stage faster retracement and option strategy until this happens. Once this happens, we might want to revert back to our original standard trading strategies of hedging by closing, carrying the position, which will be about 24,850. Until that happens, 55 days time cycle is kicked in, but the event is ongoing. So fake news पे जा सकता है, इसलिए closing important है. That's why closing is very crucial. Closing is very crucial so that you don't get trapped in kind of any fake news. There will be fake news. Closing crucial है, उस पे ध्यान रखना है। बैंक निफ्टी पे देखना है, बैंक निफ्टी का चार्ट। और कल एक काम करते, ओह वाओ, इट्स ऑलरेडी 40 मिनट्स पास सिंस आई एम टॉकिंग एंड आई डिडंट इवन रियलाइज दैट। 40 मिनट हो गया जब से मैं बात कर रहा हूं आप लोगों के साथ, ऑलरेडी 40 मिनट्स। बैंक निफ्टी में गड़बड़ है। इफ यू लुक एट दिस, बैंक निफ्टी का 54 का साइकिल ब्रेक हो चुका है, विच मींस द हाई ऑफ 61,700 विल नॉट बी ब्रीच्ड अंटिल 30th of April। गड़बड़ है, अंटिल 30th of April बैंक निफ्टी का हाई नहीं निकलने वाला। Accordingly, is this information useful? Basis of cycles. And Bank Nifty has also retraced back this rise in faster time, which means something has changed. कुछ तो बदल गया बैंक निफ्टी में, यहां पर गड़बड़ है। समझ रहे आप? So you have to get careful and cautious right now. This original 1 and 2 मार्क पहले का किया हुआ है will not be valid. This rise becomes an indication this fall is wave A. We might have wave B up, but then again sell. So Bank Nifty is now back on the sell side. Okay, back on the sell side, and you have to be careful on Bank Nifty because ये जो retracement इसने ये last लेखा किया, it's not a good sign. It's not a good sign. आवरली चार्ट पे जाके भी आप पैटर्न देख सकते हो, ये सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है। ओके, यहां पर यू कैन क्लियरली सी व्हेन निफ्टी इज नाउ सपोर्टिंग, बैंक निफ्टी इज गिविंग अप द गेन्स। इट्स नॉट अ गुड साइन बिकॉज दिस वाज द लीडर एंड नाउ द लीडर इज फॉल्टरिंग। लेट्स गेट केयरफुल। हम डिटेल में एनालिसिस कल सुबह मास्टर क्लास में करेंगे।
और आप लोग कौन कौन है यहाँ ब्रह्मास्त्र में जुड़े हुए लोग हैं क्या? यहाँ पे मैं बहुत क्विकली पोल ले रहा हूँ, एंड ब्रह्मास्त्र का लिंक भी शेयर कर दीजिए। वी हैव अ सेशन डे 1 on 11th of March, and we are going to be having a classic learning 11th of March पे, where we'll be looking at methods like this in a very simple fashion. ये तो मैंने थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आपको थोड़ा आज बताया, बट इट्स गोइंग टू बी सिंपल। बैंक निफ्टी टारगेट देखते हैं पहले, लेट्स सी हाउ इट मूव्स फ्रॉम हियर। फिलहाल तो थोड़ा ओवरसोल्ड में है, बट इट्स नॉट अ वेरी वेरी गुड साइन ऑन बैंक निफ्टी, एंड वी हैव टू बी careful now. You can be a part of Brahmastra. I'm open for questions, guys. Any questions, any doubt? Is Friday at 4 useful? Shall we continue Friday at 4? मैं सोचता हूँ Friday at 4 ज्यादा एडवांस ना हो जाए, लोगों को समझ में आएगा नहीं आएगा। I am always contemplating whether it is, I want everyone to understand it. I mean, because there are many people who are new to trading, they should also understand it. And so I keep Friday at 4 a little more this thing. But I can talk this thing at length with my mentees, क्योंकि they understand everything, so it becomes very easily for me to talk with them across. ऑप्शन चार्ट पे स्ट्रेडल कैसे ओपन किए भी नहीं बता पाऊंगा, आप जाके वाईटी पे देख सकते हो बाद में। निफ्टी आईटी के बारे में नहीं, इट्स अ रिविजन ऑफ ब्रह्मास्त्र। वैभव जैन कह रहे हैं एब्सोल्युटली, what you learned you again just imbibe that, and this Friday at 4 is helping you. Glad to know. स्पाइक इन क्रूड ऑयल प्राइस पुट प्रेशर ऑन निफ्टी एंड अदर इंडाइसेस? नहीं यार, क्रूड ऑयल को जाने दो, वो अपनी दुनिया में ट्रेड करेगा, निफ्टी अपने दुनिया से ट्रेड करेगा, रिलेशनशिप नहीं है उसका। Every session is useful, whether Friday at 4 or any other session. Thank you very much. Glad to know that. Please continue the Friday at 4. I'll definitely do that. And people who are there wanting to be on the Brahmastra, which is starting on 11th of March, day 1. Day 1 हमारा इस वीक में होने वाला था, बट होली के कारण काफी सारे जन, I think from the North India, were celebrating Holi on Wednesday, not on Tuesday because of eclipse and a lot of those things. So we shifted day 1 to Wednesday. So here is still an opportunity for someone who has not yet joined Brahmastra. सीखिए, अगर ये चीज है एंड पैशन है मुझे सिखाने का, आप देख सकते हो खुद ही। निफ्टी ऑप्शन में टाइम साइकिल पीरियड कितना होता है वो कल देखेंगे ना, मैं कल कृष्णा आपको बताऊंगा मॉर्निंग 11 o'clock मास्टर क्लास में आ जाना। मैं आई एम गोइंग टू शो यू, पोल इज ऑन गोइंग एंड आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस। सर 18 डे साइकिल वर्किंग ब्रिलियंटली, थैंक यू वेरी मच, ग्लैड टू नो। आप 18 डे साइकिल निफ्टी पे अप्लाई करें क्या? गैन के साथ उस पे 18 डे अप्लाइड था मेरा, राहुल कुमार, आपने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया। बहुत कम जन को पता है वो साइकिल के बारे में, एंड यू आर मेंशन दैट, सो आई एम आस्किंग यू। Brilliant observation. Very less people are aware about that actually, but you observed it. Fantastic. यहाँ पर there is another two stage faster retracement क्या होता है? कबीर आज थोड़ा टाइम का शॉर्टफॉल है, नेक्स्ट वीक में करेंगे टू स्टेज फास्टर रिट्रेसमेंट। मैं कल आपको उससे मेथड्स के साथ और सिंपलर मेथड दूंगा। 11 बजे आप हो क्या कभी? कौन कौन है 11 o'clock who has all joined, and people on YouTube, are you enjoying this? Then do ensure to put down your comments, like करो, सब्सक्राइब करो, and I'm not an influencer. I मतलब लोग कहते हैं आप ये बैनर डालो वो डालो, पता नहीं यार, I'm just making video basis of what I learn and what I teach. I do that. So I'm okay with that. So it doesn't matter to me. I'm a research guy. Fantastic, guys. अच्छा, बहुत ही क्विकली एक और चीज जो इंटरेस्टिंग है, मैं भूल गया बताना आप लोगों को। बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर आप ऑप्शंस को ट्रेड कर रहे हैं, इफ यू ट्रेडिंग इन ऑप्शंस, एंश्योर यू पुट एन आईवी चार्ट बिलो इट। ठीक है, इंप्लाइड वॉल का चार्ट डालिए। अगर इंप्लाइड वॉल में स्पाइक आया, सडनली स्पाइक आता है, कभी भी आता है, विच यू डोंट नो, विच आई डोंट नो, सडनली स्पाइक आएगा, दैट कैन बी एन इंट्राडे अपॉर्चुनिटी टू सेल विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप। लेकिन स्टॉप डाल के करना है, इंट्राडे के लिए सेल करना है ऑप्शन को। बहुत शार्प आया, वेट करो, 5 मिनट चार्ट पे वेट करो। रिवर्सल हुआ 5 मिनट चार्ट पे, रिवर्सल होगा 5 मिनट चार्ट पे इचिमोको के क्लाउड के बेसिस, वहां सेल करो। So it will be fantastic if you do that. So मतलब वो मेथड है, इफ यू वांट आई इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल शो दैट मेथड आल्सो, बट वो आपको नीचे लिखना होगा कमेंट्स में। सो basis of many comments that I keep getting, I keep making those videos, so you have to ensure you keep sharing those comments across. Fantastic guys, the poll is ongoing. ब्रह्मास्त्र का 10K का टोकन से भी आप सीट ब्लॉक कर सकते हो। फिर भी लोग जो रह गए थे
अपॉर्चुनिटी है क्योंकि हमने एक वीक लेट चालू कर रही, अपॉर्चुनिटी स्टिल एग्जिस्ट, यू कैन जस्ट डू दैट एंड यहाँ पर टोकन लिंक आपके साथ रखी है। एंड जाते जाते वेरी क्विक डिस्क्लोजर गाइस, वी आर सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, keep that in mind. Whatever we are doing is purely learning perspective. Investment in security market is risky. Registration granted is no way guarantee of performance. And this is a quick disclosure. The website is noted on the downside. Please make a note of that also, wavestrategy.com. तो चलिए आज के लिए इतना ही। लव टॉकिंग टू यू ऑल, इट वाज वंडरफुल इंटरैक्टिंग एंड सी यू टुमारो अगेन। पोल में पार्टिसिपेट करते रहिए एंड एनी क्वेश्चंस मॉर्निंग एट 11 a.m. ज्वाइन ऑन Zoom फॉर क्लैरिटी एंड इफ यू गो हाउसफुल यू विल नॉट बी एबल टू ज्वाइन, तो 10 मिनट पहले आना। थैंक यू, बिकम अ वंडरफुल ट्रेडर। आशीष क्याल साइनिंग ऑफ।